Hi everyone, today we are going to do the analysis of the top holdings. Whose top holdings? Definitely of Mr. Rakesh Jhunjhunwala, and we respect him. We can't forget him. Actually, we can consider him immortal for the stock market because we can't forget him forever. So here today the first stock is Titan. तो चलिए देखते हैं सब वन बाय वन, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स रहेगा. So Titan 4% stake है and the total value is around 8,728 crore. So first of all, there is a monthly chart of Titan, and as per the chart, I can't get any bearish signal because as on the monthly chart we got the bullish engulfing. So right now nothing seems bearish on the monthly chart, as well as weekly chart it seems positive. Okay, so no need to worry right now. Now time to move on another stock, Star Health. स्टार हेल्थ में देखते हैं क्या है दोस्तों. ध्यान में रखिएगा शेयर मार्केट में आने से पहले मेडिक्लेम लेना बहुत ज़रूरी है. सो वी शुड बाय द मेडिक्लेम फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट. सो दिस इज अबाउट द स्टार हेल्थ. यहाँ पे कोई इतना स्पेशल नहीं है, राइट. ना ही बुलिश ना ही बेरिश. इट लुक्स न्यूट्रल राइट नाउ, बट above the high of this candle 772 as per the weekly chart, it can move up. As per the monthly chart, it needs to cross the 772. So right now people are correlating Rakesh Jhunjhunwala stocks with the bearish trend, but we should go with the stock specific. Now time to move on. Tata Motors. Tata Motors is the people's favorite choice, but my favorite choice was Mahindra and Mahindra, बट नाउ वी हैव मिस दैट ट्रेन. सो यहाँ पे टाटा मोटर्स में आपको दिखेगा वी शुड ड्रॉ द लाइन फ्रॉम दिस टॉप टू दिस टॉप. ऐसा हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, बट राइट नाउ इट लुक्स बुलिश. It needs to cross the 536.70. It may touch the 568 or 70 as per the monthly chart. As per the weekly chart, it has already given the buy call and we made the video too when it was around 444. It really seems bullish. Right now, time to move on the Fortis Healthcare. We have so many stocks, that's why I am not taking too long time. This is the Fortis Healthcare. Looks the sideways area, choppy area. No need to spare more time. Now time to move on the CRISIL देखते हैं. CRISIL is also near to the its lifetime high. ऐसा कुछ नहीं है. It is also moving in the uptrend. तो यहाँ पे भी कोई ऐसा bearish सिग्नल फिलहाल के लिए तो नहीं दिख रहा है. This way we can draw the trend line. अभी देखते हैं फेडरल बैंक रियली लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग. Federal Bank is very near to the lifetime high 127.65. So I can't find any bearish signal in the Federal Bank also. Even as per the weekly chart, it had given the breakout above 109.45. 109.45 पे हमें बाय कॉल मिल चुका है. One of the favorite stocks as per the chart, one of my favorite stocks, Indian Hotel. इंडियन होटल वी हैड ऑलरेडी मिस द एंट्री. यहाँ से दोस्तों राइट अराउंड 160-70, बट राइट नाउ इट इज मेकिंग द न्यू हाई डे बाय डे. सो नो नीड टू वरी. इट इज ऑल्सो मूविंग इन द अप ट्रेंड. वो भी अप ट्रेंड में मूव हो रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, और लाइफ टाइम हाई बना रहा है तो क्यों डरना है भला. Nazara Tech was also favorite stocks of Mr. Rakesh Jhunjhunwala, but this stock doesn't look strong because it is near to the lifetime low. Definitely it has broken the uptrend line, but we need one close down. We need reaction. यहाँ पे एक reaction चाहिए नज़ारा टेक्नोलॉजी में. After that we can consider.
वैलिस, इसका नाम शायद नहीं सुना होगा सभी लोगों ने, बिकॉज अभी उतना लाइफ टाइम हाई बनाया नहीं है ना कि जब व्हेन एवर इट विल मेक द लाइफ टाइम हाई, इट में ग्रैब द अटेंशन ऑफ ऑल रिटेलर्स। यहाँ पे रैलिस इंडिया भी बहुत स्लो, इट मूव्स वेरी स्लोली इन दिस स्लो अप ट्रेंड चैनल। सो इसमें कोई उतना मोमेंटम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है नहीं, बट इसकी जो डेफिनेटली इट इज इन द अप ट्रेंड, बट वेरी स्लो, स्पीड इज वेरी स्लो। Escort. Mr. Junjunwala had made lots of money in Escort. Escort is from the auto sector, and auto sector looks very strong. तो ऑटो सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ एस्कॉर्ट, इट में गो अबो 1793.95। करूर वैश्य बैंक, Federal Bank looks stronger, more stronger than Karur Vysya Bank, but it is near to break the resistance above around 64.55. So it can also enter in the bullish trend because all banking stocks are looking strong like Superman, Batman, Spider-Man. Now time to move on the Jubilant Pharma, not Jubilant Food. जुबिलेंट दोस्तों, हर घर तिरंगा डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा इनिशिएटिव, मैंने भी किया है। जुबिलेंट फार्मा, नो, इट इज नियर टू द, it is making 52-week high, not advisable to go with these stocks. Okay, so I think it's not looking good. अब चलते हैं नार्को, नेशनल एल्यूमिनियम। National Aluminium moves in this channel, so we should wait for the breakout. We should wait to cross this lifetime high. So यार quick hill, please move on. चलिए इसको आफ्टर सिस्टम रिस्टार्ट कर देता हूँ, आप लोग भी यही करते होंगे मेरी तरह। और ये हो गया, दिस इज द रेक्टेंगल पैटर्न, सो नथिंग स्पेशल सीम्स इन दिस स्टॉक्स। आई थिंक जुबिलेंट, जुबिलेंट, यस ये स्टॉक्स देखते हैं। जुबिलेंट इंक्रीबिया, मैं इतना पहले शायद सुना है आगे, लेकिन बहुत सालों बाद इसे देखा है मैंने। ये जो स्टॉक्स है उसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है बिकॉज इट इज ऑल्सो नियर टू द 52-week लो। मैं ज़्यादातर एडवाइज नहीं करता हूँ, आई प्रीफर टू गो विद द स्टॉक्स हु आर मेकिंग लाइफ टाइम हाई और 52-week हाई, क्योंकि उसमें सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस कम है। एप्टेक, एप्टेक में क्या कोर्स किया था आपने? मैंने तो नहीं किया था, I never joined Aptec. Aptec is also moving in these big mountains, big Everest mountain. Selling pressure came from this top, and it is also moving in the rectangle channel like National Aluminium. So we should wait to cross this level. Agrotech food देखते हैं। I think Mr. Rakesh Jhunjhunwala has made most money from Tata Group. Its first peak was Tata Tea. Agrotech is also falling right now. It has already broken the uptrend line. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिस वे आप भी ड्रॉ कर सकते हैं और वो ब्रेक हो चुका है। तो इसमें क्या है कि स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए। वी शुड नॉट कोरिलेट द स्टॉक्स ऑफ राकेश झुनझुनवाला विथ हिज डेथ। ओके कि भाई वो उनका डेथ हो चुका है तो अभी उनके सब स्टॉक्स में क्या होगा, ऐसा कोई मीन स्टॉक स्पेसिफिक ही यहाँ पे जाना चाहिए। Otherwise, so it is taking race near to the 52-week low, so stay away from this kind of stocks. Now time to move on the Geojit. Geojit is also making 52-week low and it is falling right now. It has already broken the uptrend line. देखिए दोस्तों, यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है।
Wockhardt is also near to the, oh, it is also near to the 52-week low or lifetime low, very bearish right now. जैसे स्टॉक्स में कुछ नहीं है. इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये तो सबसे वीक स्टॉक है दोस्तों. Why we are making the video on this? Because we want to prove chart, we should not correlate anything, any event with the chart. क्योंकि उनकी डेथ हुई उसके बाद तो मार्केट क्लोज ही था. तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले से जो स्टॉक्स है, फ्यू स्टॉक्स आर ऑलरेडी वीक एंड फ्यू स्टॉक्स वर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग. देन वाई शुड वी कोरिलेट, हम क्यों इसे कोरिलेट कर रहे हैं. इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लाइफ टाइम लो पे ये स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए. ओके, एंड समथिंग फिशी माइट बी देयर इन दिस काउंटर. अनंत राज में तो कुछ राज रहा नहीं है, लेट्स सी. Anant Raj is moving in this area. There's nothing special in this stock also. So remember the one clear lesson, the conclusion is very clear कि एक स्टॉक अगर चल जाता है, so one stock can help you to make the money. One stock can put you on the top of the earth, right? Top of the world. बाकी आप देख रहे हैं सब स्टॉक्स में क्या हो रहा है. Man Infra, it's okay. This was the perfect time. Now taking rest. This man. Cargo Jam. No, weak. You just need to check it is weak. Because why it looks weak? क्योंकि यहाँ से already it has broken the trend line, and even we can draw the channel also like this. So you guys, this way. So it is in the bearish zone. Orient Cement, चलिए देखते हैं ये सीमेंट में जान है या नहीं है. सुना है क्या नाम आपने, ओरिएंट सीमेंट? कहाँ है भाई ओरिएंट सीमेंट? मैंने तो इतना ज़्यादातर अभी ट्रैक द NSE F&O स्टॉक्स फ्रेंड्स. और कई बार क्या होता है उसका कोड भी कुछ अलग होता है, तो इट टेक्स लॉन्गर. Orient Cement has also broken this channel. So it's clear Mr. Junjunwala had made most money from Tata Group, Tata Motors, Titan, Tata Tea, even Metro. Metro looks very strong. Orient Cement, NCC. NCC is moving this channel. So you guys, this downward channel. But nothing special is there. Auto line industry. I am very bullish on auto stocks according to the chart. Right? I never follow my gut feels. Right? हाथ दिल की कभी नहीं सुनता हूँ. So यहाँ पे ऑटो लाइन इंडस्ट्री में ठीक है यार दोस्तों, इसमें फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ये लेवल से. तो डेफिनेटली ब्रेक तो कर चुका है, बट लेट्स सी देखते हैं. इसमें ये सब लोग जो छुपे हुए फंसे हुए हैं, दे कैन सेल देयर स्टॉक्स एंड दिस स्टॉक कैन फेस द सेलिंग प्रेशर. बिल केयर was very famous stocks few years back. You can see why do we need to follow the stop loss? Why should we follow the stop loss? Because look at this top. It made the high of 1830 and currently traded around 12 rupees and 30 paisa. Right? That's why we prefer to follow the stop loss. Once upon a time, it was also the good stock. It was also fundamentally strong. But now, right? So this is the one of the best lesson. Why should we follow the stop loss? This is one of the best example. Heads of Ventures. What is this? I don't want to spare more time on this stock. Titan. Let's move on the Titan. Titan is definitely already bullish.
Okay, we have already seen the stocks, right? So these are the top holdings of Mr. Rakesh Jhunjhunwala stocks. Okay, so remember one thing. One thing is very clear. Only few stocks can help you to make wealthy. बट और एक चीज़ जो सीखनी जैसी थी कि हेल्थ, दोस्तों हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो उनकी लाइफ थी, उन्होंने बहुत मज़े भी किए, एंजॉय भी किया लाइफ। ही वॉज द फूडी गाई। हमें भी फूडी रहना चाहिए, लेकिन हमारी हेल्थ पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिकॉज विदाउट द हेल्थ वेल्थ इज़ नथिंग, राइट? एंड विदाउट द वेल्थ वी कैन मेंटेन द हेल्थ। तो दोनों वी नीड टूगेदर, राइट? वी नीड बोथ, राइट? सो दोनों को मेंटेन करना जरूरी है। वी शुड मेंटेन द लेवल वेल्थ एंड हेल्थ बोथ। तो दिस इज अबाउट द टॉप होल्डिंग्स ऑफ राकेश झुंझुनवाला। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।